Hello students, now our topic center of mass, class +1 subject physics. Now in center of mass, now we are doing the articles mathematical deduction to find center of mass of a system of two particles. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 particles ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ 2 particles ਨੇ. ਨਾਓ consider a system of 2 particles of masses m1 and m2. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਆ m2 ਆ. ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ 2 bodies, first mass m1 and second mass m2. now let r1 vector and r2 vector be their position vectors with respect to the origin of the coordinate axis. ਇਹ coordinate axis ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ origin ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ. ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ r1 ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਆ r2 ਵੈਕਟਰ. Now next, suppose that the particle of mass m1 experiences force F21 vector. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਫਸਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ m1 ਆ, ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ. ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ F21. F21 ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹਦਾ m2, ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ. ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਆ. ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਆ F21. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਗਰ ਲਿਖਣਾ. ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ 2 ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m2 ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ. ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ m1, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਲਿਖਣਾ. and the particle m2 experiences an equal and opposite force F12 vector due to particle of mass m1. m2 ਮਾਸ ਆ ਬੋਡੀ ਸੈਕੰਡ ਦਾ b ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ a ਤੇ ਲਗਾਈ, a ਨੇ ਓਨੀ ਆਪੋਜਿਟ ਫੋਰਸ b ਤੇ ਲਗਾਈ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਨਸ 3rd ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ F21 ਵੈਕਟਰ दूसरी बॉडी ने पहली ते लाई, पहली ने दूसरी ते लगाई, साइन क्या कहते हैं नेगेटिव 1 2, नेगेटिव मीन्स अपोजिट. सो हेयर F21 vector plus F12 vector equal to 0. Consider equation number 1. Now we will be proceed further.
consider that the two particles are acted upon by the external forces F1 vector and F2 vector small f1 respectively in the addition to the forces they exert mutually on each other। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਐਡ ਅਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਏ ਬੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਏ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ, F1 ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬੋਡੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ m1 ਆ। F2 ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ m2 ਬੋਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। According to Newton's second law of motion, now you already know what is Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, ਹੁਣ external force apply ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ momentum ਕੀ ਆ, change ਹੋਊਗਾ। Momentum of a particle is equal to the force impressed on it, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ force ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ momentum ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ change ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। Therefore, for particle of mass m1, the equation of motion, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ equations of motion ਕੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ small f1 ਵੈਕਟਰ एक्सटर्नल फोर्स लगा देती है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, d/dt p1, p1 मीनस किया मोमेंटम चेंज हो गया, किदा चेंज होया वा, बॉडी ए दा सपोज जिहदा मास कितना वा m1, d/dt p1 इक्वल टू टोटल फोर्स on the particle of mass m1। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना जिन्ना असी एक्सटर्नल फोर्स उहदे ते अप्लाई करी जावांगे। नाउ next, now total force on the particle of mass m1 किन्नी आ, उस बॉडी के उपर जिहदा मास m1 किन्नी फोर्स आ, एक तो आ फोर्स आ F21 जिहड़ी B ने A ते लगाई है, यानी कि दूजी दे जिहदा मास m2 सी उन्हें पहली ते लगाई है, ये तो पहली एक फोर्स ये होगी। एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है F1, दैट मीन साढ़े को दो फोर्सिस आ गई, ये एक्सटर्नल आ, ये आटी उन्हों की कड़ी आपस च म्यूचुअली जी एक दूजे के उपर की फोर्स लगा रहे हैं। इस केस के की आ सैकेंड बॉडी ने फर्स्ट लगाई है। इफ v1 वैक्टर इज द इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस मीनस किसी भी समय के उपर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1, देन you know what is momentum, that is d/dt momentum m1 into v1 vector। मैं मोमेंटम की वैल्यू भरती है किदा मोमेंटम, बॉडी ए दा जिहदा मास कितना m1 इक्वल टू total force, now total force F21 vector plus F1 vector, that is equation number 2। Similarly for the particle of mass m2 भी है। हुण जी उस बॉडी जिहदा मास m2 आ मीन सैकेंड बॉडी साडी जिहनूं असीं B कह रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स कौन लगा रहा, m1 लगा रहा, m1 मास आ जिहदा बॉडी का वो लगा रहा वा, प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। सो इन दिस केस
d over dt m2 v2 vector equal to f1 2 vector plus f2 vector. This is equation number 3. Now we are adding both the equations, means second and third. Now adding equations first and second. What we get? D over dt m1 v1 vector plus d over dt m2 v2 vector equal to f21 vector plus f1 vector plus f12 vector plus f2 vector. Now we collect these two terms. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ f21 and f12 and now we will proceed further. Now students, you will be know what is the values of f21 vector plus f12 vector, that is a 0. So equation becomes d over dt m1 v1 vector plus d over dt m2 v2 vector, and its value is 0. So it becomes f1 vector plus f2 vector, because f21 vector plus f12 vector equal to 0 using Newton's third law of motion. Now if we call f1 external force, f1 vector plus f2 vector equal to f dot, means total external force on the system, because internal force तो 0 हो चुकी है and we have external force remains. Then the above equation becomes, so f1 vector plus f2 vector I am writing as f dot, means here is the vectors. So above equation becomes f tot, means total, equal to d over dt m1 v1 vector plus d over dt m2 v2 vector, or it can be written as, I am taking dt commons, so f vector total d over dt m1 v1 vector plus m2 v2 vector. Now the velocity of a particle, velocity की हुंदी साडे कोले, the velocity of a particle is defined as the time rate of change of its position vector. Therefore v1 vector equal to dr1 vector over dt. Velocity of the particle
or you can say body 1, v1 vector equal to rate of change of its position vector with respect to time. So velocity v1 vector equal to d over dt r1 vector and v2 dr2 vector over dt. Now substitute the value of v1 and v2. I consider it equation number 4. Now therefore equation 4 becomes, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ v1 ਅਤੇ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ. I am putting the values of v1 and v2 in equation number 4. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ equation number 4 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ v1 ਅਤੇ v2 ਦੀ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਸੋ equation 4 becomes f total means tot equal to d over dt in brackets m1 values of v1 dr1 vector over dt dr1 vector over dt and m2 dr2 vector over dt. सो मैं वैल्यूज़ v1 ਅਤੇ v2 ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ. ਨਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? It can be written as d over dt in bracket m1. I am taking dt in the front side. d over dt m1 r1 vector plus d over dt m2 r2 vector. Now again taking dt again commons, it can be written as d over dt in bracket m1 r1 vector plus m2 r2 vector. So again it can be written as d square over dt square f vector tot means total in bracket m1 r1 vector plus m2 r2 vector. That is. Now multiplying and divide by m1 plus m2 on the right hand side. So multiply and divide the above equation by m1 plus m2. So above equation can be written as f vector total equal to m1 plus m2 d square over dt square in bracket m1 r1 vector plus m2 r2 vector over m1 plus m2. मैं m1 plus m2 नाल मल्टीप्लाई भी करता ते डिवाइड भी करता. Now I am giving the name of this equation number 5.
Now we will be discuss what this equation represent। ये जी साढ़े को इक्वेशंस आ गई आ, एफ टोटल इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर इन ब्रैकेट m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वैक्टर ओवर m1 प्लस m2, what it represent। Now students, we will be discuss on equation number 5। जो साढ़े को इक्वेशन नंबर 5 आई है असी ਉਹਦੇ बारे डिस्कस करने जा रहे हैं। Now it follows that d square over dt square m1 r1 vector plus m2 r2 vector over m1 plus m2 is acceleration and ये वाली टर्म साढ़े को की है acceleration, the rate of change of velocity, that is acceleration, d square over dt square, and m1 r1 vector plus m2 r2 vector over m1 plus m2 have the dimensions of position vectors। dimensions ने position vectors ਦੇ ਕਿਹੜੇ m1 r1 vector plus m2 r2 vector over m1 plus m2 means therefore equation 5 describe the motion। वर्णन कर दिया इक्वेशन 5 मोशन। मोशन हुण किहदा वा है टोटल मास। टोटल मास की साडे कोले 2 पार्टिकल्स ने, 2 बॉडीज ने m1 एंड m2 ऑफ द सिस्टम। सिस्टम दे विच साडे कोले 2 ही बॉडीज सी, पहली दा असी जो मास m1, दूसरी दा मास किया m2। अंडर द इफेक्ट ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एफ वैक्टर टोटल। हुण इत्थे जिहड़ी फोर्स की असीं गल कर जा रहे हैं, जिहड़ा ये मोशन आ ये किहदे करके आ एक्सटर्नल फोर्स के कारण, क्योंकि इंटरनल जिहड़ी फोर्स सी वो की हो गई सी 0 हो गई सी। सपोज टू बी इंप्रैस्ड एट ए पॉइंट, किहड़े पॉइंट ते असीं सपोज कर रहे हैं भी किसी बॉडी के सारे ते नहीं, एक पॉइंट ते की आ वो साडे कोले लागू हो रही है सारी दी सारी फोर्स। whose position vector is given by, उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर असीं पहले भी आर्टिकल कर चुके हैं, आर वैक्टर इक्वल टू m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वैक्टर ओवर m1 प्लस m2 मीन्स वैल्यूज ऑफ दिस। नाउ एज डिफाइंड अर्लियर, ठीक है पहले भी डिफाइंड कर चुके हैं, द पॉइंट हुज पोजिशन वैक्टर इज गिवन बाय द अबव इक्वेशन। आ वाली इक्वेशन के द्वारा वर्णन किया जाता वा पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर कैपिटल इज द सेंटर ऑफ मास। हुण सेंटर ऑफ मास बारे तुसी यू विल बी सी माई प्रीवियस वीडियोस, उहदे विच सेंटर ऑफ मास की सीगा साडे कोले, अगर 2 पार्टिकल्स ने m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वैक्टर ओवर m1 प्लस m2। मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 whose position vectors r1, जिहदा मास m1 आ उहदा पोजिशन वैक्टर r1 and r2 whose mass is m2 respectively फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। हुण असीं इस नूं सेंटर ऑफ मास जो साडे कोले आ गया वा डिडक्शंस, ये किहड़ी साडे कोले मैथेमैटिकल डिडक्शंस फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। हुण इस रिजल्ट नूं असीं जनरलाइज कर दांगे। द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय r वैक्टर इक्वल टू m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वैक्टर प्लस m3 r3 वैक्टर अप सो ऑन mn rn वैक्टर ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप सो ऑन mn। तो साढ़े को जो साडा टॉपिक सीगा मैथमेटिकल डिडक्शन टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਫॉर n ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸ ਔਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।